if z is equal to root 3 by 2 plus I by 2 to the power 5 plus root 3 by 2 minus I by 2 to the power 5, then तो अगर हम देखते हैं हमें गिवन है z is equal to root 3 by 2 plus I by 2 to the power 5 plus root 3 by 2 minus of I by 2 to the power 5. अब हमें पता है cos theta plus I sin theta is equal to e to the power I theta and cos theta minus I sin theta is equal to e to the power minus of I theta. तो यहाँ पर हो जाएगा z is equal to cos of pi by 6 plus I sin of 5 pi by 6 to the power 5 plus cos of pi by 6 minus I sin of pi by 6 to the power 5, that is e to the power I pi by 6 to the power 5 plus e to the power I minus I pi by 6 to the power 5. तो ये हो जाएगा e to the power I 5 pi by 6 plus e to the power minus I 5 pi by 6. वापस यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्विस थ्योरम. वापस ये यूज करते हैं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू cos of 5 pi by 6 plus I sin of 5 pi by 6 plus cos of 5 pi by 6 minus I sin of 5 pi by 6. ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा z इज इक्वल टू 2 cos of 5 pi by 6, that is z is equal to 2 into minus of root 3 by 2, that would give us minus root 3. इसका मतलब ये हो गया z is equal to minus root 3 plus 0 times of I. तो real part of z is less than 0 and imaginary part of z is equal to 0. ये दोनों आ गए हमारे पास. तो अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0 कहीं है नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. Hello students, in this question, a man walks a distance of 3 units from the origin towards northeast and 45 degree east direction. So with this we are going to draw a figure. So which states that like this. This and this. From here it states that this will be like this. So this is 3 units. It's given that this is 3 units and this is 45 degree. So this is 45 degree. So I can easily say this is also 45 degree because this angle is 90 degree, and so I am supposing this is the origin, and I am supposing this is the origin like this. Afterwards, what is given in the question? From where he walks a distance of 4 units towards northwest direction of 45 degree to reach point P, and we have to find the position of P in the index. So from there it said that this moves like 45 degree. So I'm just supposing here somewhere here. It can be anywhere, but I'm just supposing here. From here it moves to point P. So the coordinates of this I can easily write as 3 e raised to the power iota 5 by 4. So now it states that this angle is 45 degree. This angle is 45 degree. So by symmetry, can I say this angle is 45 degree? So if this angle is 45 degree, so from this I can say this complete angle is 90 degree. So now what we have to do? I am just supposing this to be Z3. Now what I have to do? I have to just apply the rotation property. See what it said that 0 minus Z, name it as Z1, 0 minus Z1 upon 0 minus Z1 upon, what should I write? Z3 minus Z1 is equals to magnitude of, what should I say, Z1 upon magnitude of Z3 minus Z1 into e raised to the power iota pi by 2. Now this is given to me is 3, 0 to Z1, and Z3 is given to me is 4 in the question. Now what I am doing here, I am just substituting the values and obtaining my results. See, minus Z1 upon Z3 minus Z1 is equals to 3 upon 4 e raised to the power iota pi by 2. Or I can say this comes out to be 3 by 4
iota. That's it. Now if I cross multiply it, so I'm getting what I'm getting, see, minus 4 by 3 z1, and this comes out to be iota in denominator, and z3 minus z1. Now if I further solve it, so can I write minus 1 as iota square? So this, if I solve it, iota square is equals to minus 1. So this comes out to be 4 by 3 z. This is not iota, this is 1. This is not iota, this is 1. So this is iota is equals to z3. This is z3 minus z1. So my answer would be, comes out to be z1 plus 1 plus 4 by 3 iota is equals to z3. Or I can write z3 as, if I have to substitute the value of z1, if I have to substitute the value of z1, which is 3 e raised to the power iota pi by 4. So I am getting 3 plus 4 iota by 3. So this comes out to be z3. So this will be cancelling out. So my final answer is this. Let me check in which form it is given. This simply is in this form is given 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota into e raised to the power 1 by e raised to the power iota pi by 4, not 1 by 4. This is given to me is, that's it. So my final answer is 3. Let me check what is that. 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota e raised to the power this one. So T is my correct option. Thank you. हमारा क्वेश्चन है द शेडेड रीजन वेयर p इज इक्वल्स टू -1 0, q इक्वल्स टू -1 प्लस √2, √2, r इक्वल्स टू -1 प्लस √2 एंड -√2, s इक्वल्स टू 1, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमें गिवन कर्व में शेडेड रीजन गिवन है, इसमें हमें बताना है कि इस शेडेड रीजन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पॉइंट्स लिखती हूँ। p गिवन है -1 0, q गिवन है -1 प्लस √2, √2, r गिवन है -1 प्लस √2, -√2, और s गिवन है 1, 0। तो सबसे पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकाला पी क्यू का और मैग्नीट्यूड पी एस का और मैग्नीट्यूड पी आर का। तो मुझे पता लगा इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं 2 के। अगर इन तीनों के मैग्नीट्यूड यानी जो हमारा ये पी क्यू है, ये पी क्यू वाला पार्ट, ये पी आर वाला पार्ट और ये पी एस वाला पार्ट, ये तीनों इक्वल, इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। ये कब हो सकता है? जब कोई सर्कल की बात हो रही हो और अगर ये जो पी क्यू पी एस और पी आर है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हम लिख सकते हैं देखो शेडेड पार्ट। अब ये देखा जाए, अगर मैं इसको सर्कल बोलती हूँ पी क्यू आर को, तो कह सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है वो सर्कल का एक्सटर्नल पार्ट है। तो शेडेड पार्ट represent the external part of circle having center -1, 0। -1, 0 सर्कल का सेंटर हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा 2 एंड रेडियस 2। अगर ये सर्कल फॉर्म होता है तो पॉइंट P जो है ये -1, 0 पर लोकेटेड है। तो हम कह सकते हैं इस सर्कल का सेंटर -1, 0 हो गया। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल
equation of circle having z0 center and radius। तो इसकी इक्वेशन हमें नॉर्मली पता है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r। देयरफॉर z माइनस हमारा सेंटर क्या आ रहा है सर्कल का -1,0। इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं -1 + 0 आयोटा, और ये जो एरिया है वो एक्सटर्नल है, तो ये जो होगा ये पार्ट ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ z + 1 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है। अब इसका आर्ग्यूमेंट अगर मैं देखूं तो आर्ग्यूमेंट z + 1 का जो आर्ग्यूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर इसका आर्ग्यूमेंट देखें तो वो है π/4 इज π/4। तो हम लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है, आर्ग्यूमेंट जो है z + 1 का वो लेस देन इक्वल्स टू π/4 होगा। गिवन फिगर से देख सकते हैं कि जो सर्कल गिवन है उसका आर्ग्यूमेंट π/4 से -π/4 वेरी कर रहा होगा, तो उसे ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट बताया, वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आर्ग्यूमेंट जो होगा z + 1 का इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो हो जाएगा -π/4 इज -π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/4। और ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के यूज से मैं लिख सकती हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 जो होगा वो लाई करेगा -π/4 से π/4 तक। तो इसे सिंपली मैं लिख सकती हूँ मॉड्यूलस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू π/4, which is option 1. This is our answer. Thank you. Hello children, the complex numbers z1, z2, z3 satisfying z1 minus z3, z2 minus z3 equals to 1 minus I√3/2 are the vertices of a triangle which is of area 0, angled isosceles, equilateral triangle, obtuse angled isosceles triangle. So which of these are that given triangle are? Okay, I'll note back now. So what is given andre? What is given? z1 minus z3 by z2 minus z3 is equal to 1 minus I√3 by 2. Alva? So idna I'll take conjugate of the numerator. So given, so 1 minus I√3 by 2. So terms will be same, only change in sign. Alva? 1 plus I√3 by 1 plus I√3. This is the form of a minus b, a plus b. Alva? That is so a square minus b square andre 1 square minus I²√3 square by 2 into 1 plus I√3. Howda? So 1 is 1 only. So I square hangandre, so we'll see that one.
I square andre minus 1, this becomes plus 1 alva, plus minus into minus plus agibidutte. So illi square and root get cancels, so into 3 by 2 into 1 plus I root 3, that is equal to, so 1 plus 3 is 4 by 2 1 plus I root 3. So it's nothing but this 2 and this 4 get cancels, like 2 ones, 2 twos, then what is remaining under z1 minus z3 by z2 minus z3 is equal to 2 by 1 plus I root 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ I'll take reciprocal. z2 minus z3 by z1 minus z3 equals to 1 plus I root 3 by, otherwise 1 by 2 plus I root 3 by 2 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, so this z2 minus z3 by z1 minus z3, so half 1 by 2 alva, so cos pi by 2, pi by 3 is 1 by 2, okay, sin pi by 3 is equal to root 3 by 2, so I'll put it in the form of cos and sin, that is cos pi by 3 plus, so sin pi by 3, that is z2 minus z3 by z1 minus z3, so this is nothing but 1. Therefore z2 minus z3 by z1 minus z3 equals to 1. Then bring this side, so z2 minus z3 equals to z1 minus z3. So therefore argument of z2 minus z3 by argument of z1 minus z3 equals to 1. So here we can say that is equal to pi by 3. So theta andre pi by 3, that is 180 by 3 means 60. So it should be a equilateral triangle. Okay, third option, correct answer. Thank you, children.